Good evening, everyone. Guys, please let me know if my voice is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So, if my screen is visible, okay, fine. So, let's just start session. So, anybody remember what we discussed in last session? Anybody? Okay. So, basically, in last session, we have discussed the data types. What are the types of data types we are having? First category is known as numeric data type. In that, we are having int, float, and complex. So, we have already discussed what is integer, what is float, and what is complex. Second kind of data type is our sequence data type. Now, we are going to discuss what are sequence data type. Okay. Now, anybody who remember what is the meaning of sequence? Sequence. In real time, what is the meaning of sequence? Anybody? Any idea? What is the meaning of sequence? It's sequence of students. Sequence of students. What is the meaning of that? Anukram, correct, Nandu. Line base, correct. That means one after another. Yeah, collection. Yeah. So जिनके अभी बेबी हुआ sequence है means one कैसे after another. Please mute. ब्रेस्ट कैंसर आजकल में बहुत कॉमन है हीना खान को भी हो गया है वो उसकी तो शादी भी नहीं हुई Sequence means one after another. Now, if I am talking about numeric data type. So numeric data type is only capable of holding a single value. A single value is going to be, for example, int data type. What int data type is doing? Int data type is used for storing integer value, like a is equal to 10. How many values are there? Only one value. Only one value is able to, like this int data type is capable for storing only integer value. Up, if we want to store multiple values, then which concept we are having? Then we are having sequence data type. So sequence data type means if we want to store multiple values in a sequence, then we are going to use sequence data. So in our language, if we can say, then we can say if we want to store multiple values, multiple values multiple values as a single entity. Entity means variable in a single variable. Then we will use sequence data. Now here one thing. In sequence, ordering is possible or not? Anybody? In sequence data type, we are having some order or not? Just think. Repeat, In sir. sequence, yes, it is there. If you are talking about sequence of student, definitely there is some sequence, some standard, some order will be there. So here also sequence data type are having an order. Okay. So this is your sequence data type. What are the sequence data type we are having? We are having list as a sequence data type. We are having tuple as a sequence data type, and we are having a string is our sequence data. So basically, these three are the data types which are sequential data type. That means these are used for storing multiple values into a single variable. When we are talking about int, float, and complex, only one value is going to be stored in this. But I want to store multiple values. So for that, we are having this sequence data. So now we are going to discuss about list data type, that is first sequence data type, that is list. Now, what is list? So list is what? It is a collection, or you can say a sequence of dissimilar elements. So I want to store multiple elements into a single variable. How we will do it? For that, we are having list concept. So what is list? List is a collection of dissimilar elements. List is a collection of dissimilar elements. So different kind of elements you can store in
list. Now, if we want to create a list, how we can create a list? What is the way? So list is represented by स्क्वायर ब्रैकेट. सो हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है लिस्ट को बनाने के लिए. जब भी कोई भी लिस्ट होगी तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होगी. इफ देयर इज एनी लिस्ट देन दैट लिस्ट मस्ट कंटेन दिस स्क्वायर. सो स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ list. Okay, that this is your. There is one more thing which is there, that is known as mutable and immutable. So list is mutable in nature. What is the meaning of mutable? So remember this thing. This mutable term, and there is one more term that is immutable. In real time, we are using these two words a lot. Mutable means we can change the content of list. That is the meaning of mutable. Mutable means we can perform changes in it. So हम लोग एक बार अगर लिस्ट बना लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं. That is the meaning of mutable. I will show you with live example. See, first thing is, if we want to represent a list, so list one is equal to square bracket. Now within this square bracket, we need to write, because it is a collection of dissimilar elements. So dissimilar elements we can store inside this. So first I am taking 10. One element is 10. Then I am taking 20.5. Second element. Third element I am something like true I am taking. Okay. Then again 35.64 like this. Now what is this? This is your list data type. Why it is list? Because first thing you have used square bracket. So this is square bracket is used to represent a list. And second thing is it is a collection of elements. So if you are representing any group of element in square brackets, in your words, in other words, if we can write, then we can write, if we want to represent a group of elements, a group of elements, a group of elements within square bracket, within square bracket, then we will use. Okay. So within square bracket, if you are storing multiple values, then that is your list. Now, how we can check whether it is a list or not? So the function which we are having is type function. In last session, I have discussed this type function. What this type function is giving? Basically, this type function is used to represent which kind of data type this list one is. Which kind of data type is list one is. So this list one is of list kind of data type. So if I am going to run this, you will see we will get answer as class list. That means it is of list data type. It is of list data type. So this is your list. Now here one more thing we have mentioned, list is mutable in nature. Mutable means suppose that I have created this list. This is my list. So here you can see class list. Now I have created this list. Suppose that I want to perform any changes in this existing list. This is my existing list. I want to perform any changes in this existing list. So if you want to perform any changes in existing list, then that changes will be there in your original list. That means you can perform changes. No any issue is there, you can perform changes. Okay. And one more thing you need to remember here with respect to sequence data type. Sequence data types are having an order and index. Okay. And index. And each element and index will start from zero. From zero. What is the meaning of this? Try to understand. Now, here I am trying to store multiple values. Here I am trying to store multiple values into one single variable, that is list. What sequence data type will do? If you are trying to store multiple elements, then this it is a sequence data type. तो sequence data type में क्या होता है कि जो element होते हैं उनको index number मिल जाता है सबको. For example, if I am talking about this one, so let me go on paint and then let me explain how this will be stored in your memory. It will be look like this. See.
And this is applicable for every sequence kind of data, because sequence data type is your order type of data. Sequence data type is always in order. In order. That means your sequence data type will always present in order. What is the meaning of order? Now this point you will understand. See. Suppose that I am having some list x is equal to 10, 20, 30.5, true. This is my list which is there. And one more element, let me add something like 50. This is a list that I have created. So what Python will do, this all elements will be stored in your list like this. 10 will be there, then 20 will be there, then 30 will be there, then true will be there, then 50 will be there, and one more element, let me add 60. Okay, these are the elements. Now what Python will do, what is the meaning of this order? This order means your first element, whatever first element you have stored in your list, that element must be present in some index value, and that index value is 0. First element will always be stored in 0th index. Then next element, दूसरा एलिमेंट कहां पे होगा? फर्स्ट इंडेक्स. तीसरा एलिमेंट कहां पे होगा? सेकंड इंडेक्स. देन नेक्स्ट एलिमेंट कहां पे होगा? थर्ड इंडेक्स. देन नेक्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ. So in sequence data type, every element is having some index value. Every element is having some index value, and if first index value will always start from 0. पहली इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट. तो अगर इस केस की बात करें, जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 10th is present at which index? It is present at 0th index. This 20.5 is present at which index? First index. This true is present at 0, 1, 2. Then 35 at 35.4 as third index. So each element is having its own index value. That is the meaning of order. Wherever order is coming into picture, this order, always indexing is applicable in that. So whatever elements you are storing, and every element is having some unique index value. So here 10 is at which index? At 0th. So if I want to check, how we will check it? We will check it like list name, within bracket, your index name. So for example, I am writing print list of something like, okay, list of list 1, not list 1, sorry, the index value. For example, I am giving 2. Now according to this, 0th element, first element, second element. So second element is what? True. So that true will be your result. So same as it is if I am writing something like 3. So here you will see 35.4 is your result. So in case of sequence data type, every element is having its own index value. So this 10 is your list index, 10 is your at 0th index. 10 हमारा 0 index पे present है, 20.5 हमारा दूसरे index पे present है. That is the meaning of sequence data. Every sequence data type is having this indexing concept. हर sequence data type में ये चीज applicable. Each and every sequence data type is having this type of thing. Okay. Now, here one more thing I have mentioned, list is mutable in nature. What is the meaning of mutable? Mutable means, suppose that I have created this list. Now my requirement got changed. I want to perform changes in this list. What is the change that I want to do? I want to replace this 10 with 100. That is my requirement. I want to perform this change. I want to change this 10 value to 100. So can I do this? Yes, you can do it in case of list. In case of list, you can perform this change. If you want to change this 10 to 100, you can perform changes. So अगर list create करते हो तो उसमें हम लोग changes कर सकते हैं. That is the meaning of mutable. Mutable means you can perform changes. Once it is created, you can perform changes in. Once you have created, you can perform changes in it. That is the meaning of mutable. So list is mutable in nature. That means list is changeable in nature. Once you are creating a list, you can perform changes in it. That is the meaning of
this. So if I can take example for this. So suppose that I want to change this zeroth index value with some other value. For example, I am writing list one of 0. So what we will get? We will get value as 10. Now I want to change this value with some other value, something like 100. So what it will do? List one of 0. So list one is what? List one is this complete list. What is my zeroth index? This zeroth index. Now this zeroth index is going to be changed with 100 as a value. So if I am going to run this, our result will be, your list will be changed. What is the change that you will see in your list? Your first element is going to be changed with 100. See, 10 got changed with 100. That is the meaning of this. Okay, this is your list. So list is a collection of dissimilar elements. That means you can take any kind of element in list. It is applicable. Third is, if any group of element you are representing in a square bracket, then that is your list. Is mutable in nature. That means it is changeable in nature. Changeable means हम अगर लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं. Whatever change we want, we can do it. So here what change I am trying to do? In first element, or change first element value with, और चेंज किसके बेसिस पे हो रहा है? इंडेक्स नंबर के बेसिस. सो एवरीबॉडी राइट, आई वांट टू चेंज दिस ट्रू वैल्यू विद फॉल्स वैल्यू. कैसे करेंगे? हमको इस ट्रू को फॉल्स में बदलना है. कैसे करेंगे लिस्ट में? एवरीबॉडी प्लीज राइट इट. व्हाट कोड आई नीड टू राइट? 10 को 100 में चेंज करना देख लिया, अब ट्रू को फॉल्स में चेंज करना है. कैसे करें? एवरीबॉडी बताओ. ट्रू को फॉल्स में चेंज करना है. दैट इज अवर रिक्वायरमेंट. एनीबॉडी who can tell? I want to change this true with a false value or some other value, any value we can take. So how we will do this change? कोई तो बोलो, anybody? Okay, someone has it in chat box. Okay. List one of two is false, correct. What about others? What about others, guys? Simple. First, you need to fetch the index, because based on index value only we can perform changes. So पहले तो हमको index इसका निकाल. So क्या index होगा? Index will always start from 0. So this first element is present at 0th index. This second element is present at first index. This third value is present at second index. That means I need to perform change in this second index. So what I will write? I will write list name, that is list one. Within bracket, your index number that you want to change. So index is what? This is my 0th index. This is my first index value, this 20.5. This is my second index value. And this is my third index value. So that means second index value I want to change. And what is the value that I want to put? I want to put it as, that's now your true is going to be changed with. So based on the index value, we can perform changes in case of. So this is mutable. That's why we are able to perform the changes in it. Okay, it is mutable. That's why we are able to perform changes in it. Okay, that is the meaning of mutable. Now, if any question, any kind of doubt is there, please let. कोई भी doubt हो list से लेकर, then you can ask. Anybody, any type of doubt, any question? Any type of question, any kind of doubt, anybody? No doubt. Let's make it as two-way interact. Okay.
दोनों तरफ से। नो डाउट। Okay, let's take second data type, that is our tuple data type. Now, what is tuple data? So, tuple is also similar to list two. If we want to represent, it is just a collection of what? Dissimilar elements. It is also a collection of dissimilar elements. Now, if any group of element is represented by parenthesis, then it is what? It is your, अगर किसी चीज को भी हम लोग पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज अ टपल. ओके, एंड इन केस ऑफ टपल, टपल इज immutable in nature. Immutable means once we cannot perform any changes in. So एक बार टपल क्रिएट कर लिया, then we cannot perform any kind of changes in. Changes applicable नहीं. If you are creating a tuple, you cannot perform any changes in it. No any changes possible in case of tuple. So if we want to represent a group of element within parenthesis, then we will use tuple. And tuples are immutable in nature. Immutable means we cannot perform any changes in it. Once you are creating a tuple, you cannot perform any kind of changes in that. So what I will do, I will only perform one change, that is change the bracket. And let's see what is the type we are getting. Just change this bracket and see what is the type that we are getting. Tuple one. So the type of this one will be your tuple. See, it is of tuple. It is of tuple type. Oh, sorry. Okay, fine. Yeah, it is of tuple type. See. Now in tuple also, we are, because tuple is a sequence data type. So जहां sequence data type आ रहा है, वहां हमारा indexing का concept applicable रहेगा. So in tuple also indexing is possible. So if you want to get any value, if you want to get any value, we will get that value with the help of index number. So for example, I want to get this 35.3. So this 35.3 is present at which index? 0, 1, 2, 3. Third index. So if I am writing tuple 1 of 3, it will give you 35.4 as a result. Now, tuple is immutable in nature. Immutable means we cannot perform any changes in it. So क्या मतलब है इसका? हमने यहाँ पे create किया tuple. क्या हम इस true को false कर सकते हैं? The answer is no. We cannot do it. If you are trying to do it, it will raise an error for you. यहाँ पे error आ जाएगी. अगर change करने की कोशिश भी करोगे, तो भी हम लोगों को error आएगी. So we cannot perform any kind of changes in your tuple. Let me show. सेम चीज कर रहे हैं यहाँ पे. टपल वन के 0th एलिमेंट को 100 से चेंज करो. बट व्हाट वी विल गेट इन दिस केस? वी विल गेट एन एरर इन दिस केस. व्हाई? बिकॉज टपल को जो है हम लोग चेंज नहीं कर सकते. इफ वी आर क्रिएटिंग अ टपल, you cannot perform any kind of changes in it. That is a major difference between list and tuple. So major difference is tuples are immutable in nature, lists are mutable in nature. That is a major difference. Second difference is list is represented by square brackets and tuples are represented by parentheses. That is a major difference between list and tuple. Okay. So if I am going to run this, just keep list. Okay. Now see, if I am going to run this and see, you will get an error. See, type. Why? Because this tuple one is of tuple type. So tuple को हम लोग change कर ही नहीं सकते. If we are trying to perform changes in tuple, we will get an error in that. So tuples are immutable in nature. Immutable means once you are creating a tuple object, you cannot perform any kind of changes in it. Any kind of changes is not. कोई चेंज पॉसिबल नहीं है टपल के अंदर.
एक बार टपल क्रिएट कर दिया तो वही रहेगा, उसके अंदर ना हम कुछ एडिशन कर सकते हैं ना हम कुछ डिलीशन, कुछ नहीं कर सकते। ओके, दैट इज द नाउ एनी डाउट इन केस ऑफ लिस्ट एंड टपल, प्लीज लेट मी नो दिस। If any kind of doubt is there in list and tuple, please let me know. Yeah. What about others, guys? Any type of question, anything you want to ask, you can ask. Okay, fine. Next one. So next is your string data type. So what is our string data type? So basically, string is also a collection of. Now here Data. elements are not there. Yeah. Someone is asking. Yeah, Manisha, go ahead. Yeah, Manisha, go ahead. Okay. नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप? सो स्ट्रिंग क्या होता है? हमारा टेक्स्ट का एक टाइप का डेटा। अगर हमको कोई टेक्स्ट स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टोर माय नेम इज प्रत्युष श्रीवास्तव, आई वांट टू स्टोर दिस, सो फॉर दैट वी आर हैविंग स्ट्रिंग डेटा टाइप। सो स्ट्रिंग डेटा टाइप को हो चाहे टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा, ओके, इट इज नोन एज स्ट्रिंग। सो टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज स्ट्रिंग। नाउ हियर वन थिंग यू गाइस नीड टू रिमेंबर, string is a collection of characters or sequence of characters. What is the meaning of characters? Character means whatever keys you are able to see in your keyboards, that is your characters. That is your characters. So any key you are able to see in your keyboard, that is your character. Your plus is your character. Your star is your character. Your each and every alphabet is your character. Okay, everything is your characters. For example, if I can show you here, see, 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 I can take this example. See, this is which type of character? Alphabet. Same as it is if I am having some number type of data. This is your number. See, which type of character it is? It is your integer type. So every character, and one more thing, character is of one length. Okay, character means one length value, one length value. What is the meaning of this? 10 I am writing. Is it a character? The answer is no, it is not a character. Why? Because how many characters are there? 1 and 0. 2 characters are there. That's why it is not a character. Character means single length. Single length means 1 is your character, 9 is your character, 8 is your character, 7 is your character, 6 is your character, 5, 4, 3, 2, 1. These are characters. A, B, C, like this. These are characters. Special symbols are your characters. That means one value. One value is your character. Only one value is your character. Okay. 43 is not your character. 1000 is not your character. Okay. Character means one length width. Single value is your character. Okay. Or you can say single value is your character. Single value is your character. Okay. Now, how to represent a string? So anything within single quotes, or double quotes, or triple quotes, are known as strings. So कुछ भी हो, अगर कोटेशन के अंदर है, then it is a string. अगर कोटेशन के अंदर कोई भी चीज हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then that is your string. Okay. If anything within single quotes or within double quotes or within triple quotes are your string. Okay. Anything within single quotes, अगर single quotes में है तो भी string है, double quotes में है तो भी string है, ट्रिपल कोट्स में है तो भी string. अगर कोई भी चीज कोट्स के अंदर, then it is your, either it is a single quotation or double quotation or triple quotation, anything it is your string. Okay, and string is immutable in nature. Remember this. String is immutable. That means एक बार string हम लोग बना लें तो उसके अंदर हम लोग कोई भी change नहीं कर सकते.
उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं. रिमेंबर दिस. वंस यू आर क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, we cannot perform any kind of changes in case of string data. Let me take few examples. I am writing something like string 1 is equal to my name is. Now here I have used single quotes. Single quotes. So within single quotes, whatever you have written, that is your string. सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख रहे हो, तुम्हारा स्ट्रिंग. सी, print type of string. What is the type? String. See, str, that means a string. If you are writing anything in double quotation, then it is also your string. See, if you are writing same thing in triple quotation, then also it is a string. So कोई भी टेक्स्ट हमको लिखना है अगर पाइथन के अंदर, तो हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं. कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं. And all three are what? All three are text. Let me take one more example. I am writing string 1 is equal to something like, anybody who can tell me what is the type of it? Just think, what is the type of this? Anybody? What is the type of this? It is your string data type. Why string? That's why first definition is very important. ये वाली definition. कुछ भी हो quotation के अंदर, कुछ भी कोटेशन के अंदर है तो वो स्ट्रिंग. रिमेंबर, कुछ भी कोटेशन के अंदर है तो वो स्ट्रिंग है. तो यहां पे देख रहे हो कोटेशन के अंदर वैल्यू क्या है? 10. तो ये स्ट्रिंग, क्योंकि कोटेशन है यहां. अगर हम लोग कोटेशन रिमूव कर दे, देन विच डेटा टाइप इट इज? एनीबॉडी? इफ आई एम रिमूविंग द कोटेशन, देन विच डेटा टाइप इट इज? तब ये कौन सा डेटा? तब ये इंटीजर. ठीक है. तो कोटेशन के अंदर कुछ भी होता है वो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है. And anybody who can tell me how many characters are there in this? How many characters are there? Two, sir. Two. Two characters. Two characters are there. First character is 1, second character is 0. Okay, two characters are there. This is your string. Okay, this is your string. Now one more thing, this immutability change. Let's see. See here. Here also indexing is there. Here indexing will be there based on the character by character. What is the meaning of this? This is your 0th character. This is your first. So character by character indexing will be done in case of string. So here I can write character by character indexing will be done in case of string. So character by character indexing will be done. What is the meaning of this? See, suppose that I want to print hello world. I am writing something like x is equal to hello world. This is my string which is there. Okay. Now see, if you are representing like this in Python, it will be stored in the form of, because it is a sequence data type, like this it will be there. H will be there, E will be there, or something directly. Let me write directly. It will be H will be there, then E will be there, then L will be there, then L will be there, then O will be there, then space will be there, then W will be there, O will be there, R will be there, L will be there, T will be there. These are the characters which are there. Okay. Now, how indexing is working in this case? In this case, your character by character counting. That means this H is there at 0th index. This E is there at first index. This L is there at second. Then L is there at third. Then O is at 4th index. Then this space is at 5th index. Then W is at 6th index. Then O is at 7th index. R is at 8th index. L is 9th index. And D is 10th index.
Let me show you this. String 1 is equal to hello. Okay. I am writing print string 1 of of index value. So here I am taking 9. Let's see we are getting L or not. 9. See, we are getting, okay. Same as it is if I am writing 5. Then for 5, what is the value which is there? Space is there. Space means you will not get anything because space is not represented here. See, extra space you are in. Because fifth index is your space. That's, and next point is it is immutable in nature. Immutable means you cannot perform any changes in it. What is the meaning of this? Try to understand. I have created a string. I want to perform the change as first index value. First index is H. H I am going to change with something like G. Let's see whether this change is applicable or not. Whether you can perform this change or not in case of string. See, we are getting error. We are getting error. क्योंकि एक बार string बन गई तो उसको change नहीं कर सकते. We cannot perform any changes in the existing string. If you want, you can create a new string. अगर तुमको इसके साथ कोई changes करने भी हैं तो नई string बनानी. Then we can do. In the existing string, no any changes you can do. That means the string is immutable in. Immutable means you cannot perform any kind of changes in it. If you are trying to perform changes, it will give you an error. So this is your sequence data type. Now, any kind of question, any kind of doubt you can ask, if any doubt is there. And one more thing, at the top level, I am explaining this sequence data type. I will take separate session because here, in case of tuple list, these are very deep concepts. So यहाँ पे खूब सारी फंक्शंस भी हैं हमारे. टपल के लिए खूब सारे फंक्शंस हैं हमारे, स्ट्रिंग के लिए फंक्शंस हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग के अंदर. So at the top level, I am just giving you some idea about data types. Okay, so ये बस आइडिया के लिए है कि टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है. इनके लिए बहुत सारा डिस्कशन होगा कि टपल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं वैल्यूज को, कैसे डिलीट कर सकते हैं. एवरीथिंग इज, what are the functions which are there in tuple, in list, in a string, everything is there. So at the top level, I am just giving you an idea of data types here. It is just for basic purpose I am explaining. Okay, so that is the thing. Now ask your doubts. If any kind of question is there in sequence data type, you can ask. When we use approximate in a string, then we will count approximate ampersand. You are talking about ampersand. Ampersand you are talking about. Naman. Ampersand is going to be considered as a special character. A special character. So I told you now, whatever things are there, this space, in case of a string, space जो होती है वो हमारी इस एक कैरेक्टर के रूप में काउंट. और किस टाइप का कैरेक्टर हमारा स्पेस होता है? स्पेस हमारा जो है वो स्पेशल कैरेक्टर. स्पेशल कैरेक्टर. तो अगर तुम एम्परसेंट भी लोगे तब भी वो स्पेशल कैरेक्टर ही कंसीडर होगा. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. Let me make it as a comment, and then I am writing something like string 1 is equal to, देखो यहाँ पे क्या लिखा. Hi, I am PR. Now ampersand I am using, T I am using, then something like here instead of A at the rate I am using. Okay, something like this I am using, this I am using, this 98 I am using, some data I am using just. Now here, see here, these characters are also there, and whatever spaces यहाँ पे देख रहे हो ये हमारे स्पेशल स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स. स्पेशल कैरेक्टर्स में क्या आता है? जितने भी तुम्हारे F1 से F5 तक कीज होती हैं, सॉरी 1 to 5 के बीच में जितनी, 1 to 9 के बीच में जितनी कीज होती हैं, सब स्पेशल कैरेक्टर के अंदर. क्या ब्रैकेट भी आएगा? हाँ, अगर कोटेशन के अंदर है तो ब्रैकेट भी हमारा स्पेशल कैरेक्टर ही कंसीडर होगा. ब्रैकेट के अंदर अगर हमारा कोटेशन है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कोटेशन. अगर कोटेशन के अंदर कुछ भी है, एनीथिंग इज देयर, देन दैट विल बी लिस्ट. ओके, और यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काउंटिंग हुई. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मींस zeroth element, first element, second is what? Index, then I, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth,
9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So if I am writing a string 1 of 26, see, we will get only the closing square bracket. See, closing square bracket. Because character by character counting हो रही है. तो कोटेशन के अंदर कुछ भी तुम लिख दो, ठीक है, वो हमारा स्ट्रिंग ही रहेगा, और काउंटिंग जो होगी वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही होगी. ओके, दैट इज इट. नमन, क्लियर हुआ? दैट इज इट. एनी अदर डाउट इन सीक्वेंस डेटा टाइप? ओके, फाइन. आफ्टर दिस वी आर हैविंग बूलियन डेटा टाइप. तो बूलियन तो बहुत सिंपल है. व्हाट इज बूलियन? एनीबॉडी पढ़ा है पहले से? 0 1 0. ओके, सो बूलियन डेटा टाइप मींस ट्रू एंड false. True and false. If something is correct, you will get true as a result. If something is wrong, then you will get false as a result. But here one thing is there. Internally, true means 1 and false means 0 in Python. This point is very very important. ये बहुत जरूरी है समझ. क्या मतलब है इसका? समझो. Here I am writing something like is married. क्या तुम married, like तुम married हो या नहीं? I am writing false. So which kind of data type this one is? This one is your Boolean data type. Let me check the type of sorry. Okay. Let's see the type. It is of bool type. Now, why I have written internally true means 1 and false means 0? This point is very important. Try to understand. If I am writing something like true plus false minus true plus true plus true. Anybody who can tell me what answer we will get? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में पूछा गया है, टीसीएस में एमसीक्यूज में पूछा गया है क्वेश्चन. एनीबडी? क्या रिजल्ट होगा इसका? गेस करो. क्या ट्रू फॉल्स में आंसर होगा या कुछ और आंसर होगा? सोचो देन बता. ये पूछा गया है क्वेश्चन टीसीएस में, एमसीक्यूज में. क्या? व्हाट इज द रिजल्ट? जस्ट थिंक. द रिजल्ट विल बी योर इंटीजर. ओके, क्यों इंटीजर होगा? क्योंकि मैंने यहां पे पहले लिख दिया है ट्रू मीन्स 1. तो यहां पे तुम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर, तो इंटरनली पाइथन क्या करेगा? ट्रू को 1 कंसीडर करेगा और फॉल्स को 0 कंसीडर. तो इंटरनली पाइथन यहाँ पे अपना लॉजिक लगाएगा मैथ्स का. क्या मैथ्स का लॉजिक? ट्रू मीन्स 1, जहां जहां फॉल्स होगा उनको 0 कर देगा, जहां जहां ट्रू होगा वहां 1 कर देगा, और जहां जहां फॉल्स होगा वहां 0 कर देगा. अब इसको सॉल्व कर. इसको सॉल्व करोगे 1 1 कट जाएगा. 1 + 1 2 इज योर रिजल्ट. सी. Okay, so that is the thing. Same as it is if I am writing. Anybody tell me the answer? True into 3. क्या रिजल्ट आएगा? It will be 3. Now let's take some example I am taking, which is some funny example. Okay. Anybody tell me the result of this? देखिए किसका दिमाग सबसे तेज चल रहा है यहाँ पे. It is 1. Okay. किसका दिमाग सबसे तेज चल रहा है यहाँ पे? करेक्ट. नमन, योर रिजल्ट इज करेक्ट. द आंसर इज 0. सीधे 0 आ जाएगा. सीधे 0 क्यों आएगा?
भाई फॉल्स से किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भाई वो जीरो ऑलरेडी हो जाएगा, तो इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही क्या है, वो तो ऑलरेडी जीरो ही रिजल्ट आना है हमारा, क्योंकि फॉल्स जो है वो जीरो कर रहा है। तो ये जब जीरो कर ही देगा, जीरो इज जीरो, जहां जीरो आ गया वहां सब पीछे हो गया। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन में जीरो हमारा हीरो, दैट इज द थिंग। ओके, सो दैट थिंग इज ऑल्सो। सो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन थोड़ा प्रिपेयर करके रख। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट वी फॉरगेट द लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड। सो नाउ एनी डाउट इन दिस बूलियन डेटा टाइप? Boolean means true and false. Simple. True and false means Boolean. Okay. Internally, true means zero, false means true means zero, false means. Okay. Yeah. Any doubt in Boolean data type, guys? Clear. Now, after this, the next data type is there, that is known as set data type. Okay. Now, set is similar, but ये सीक्वेंस के अंदर नहीं आता। सेट डेटा टाइप जो है वो सीक्वेंस के अंदर नहीं आता। अब क्यों नहीं आता है? सेट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ। अब कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो सकता है कि भाई ये सीक्वेंस में क्यों आना, क्यों नहीं आ रहा है जब ये कलेक्शन है, जब ये भी मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करता है। रीजन ये है कि क्योंकि सेट इज अनऑर्डर्ड इन नेचर। मतलब ये कलेक्शन, मतलब सबको स्टोर तो कर रहा है लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है इसके। दैट मीन्स इंडेक्सिंग नहीं है यहाँ। सेट इज अनऑर्डर्ड इन नेचर, क्या मतलब है इसका, समझो। Suppose that I am creating, or let me write how to represent a set. Set is represented by curly braces. Curly braces. And next one is set is mutable in nature. That means changeable. Once you are creating a set, you can perform changes in it. And one more point, set does not consist duplicate. Set does not consist. So duplicate value यहाँ पे अलाउड नहीं होती है set। ठीक है, पहला डिफरेंस समझ गए होगे। सीक्वेंस डेटा टाइप में क्या होता है, हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट सेट में डुप्लीकेट तो अलाउ होता ही नहीं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो आता है वो अनऑर्डर्ड नेचर होता है। अनऑर्डर्ड नेचर का मतलब क्या होता है, समझो उस चीज। मेरे पास बुक्स हैं, एट सपोज दैट 5 बुक्स हैं, और 5 नहीं, 100 बुक्स हैं मेरे पास। समझना इस चीज को। 100 बुक्स हैं हमारे पास, एक लाइब्रेरी है उसमें बुक शेल्फ्स। ओके, 10 बुक शेल्फ्स है। One is there, the same as it is. Two is there, three is there, four is there, and so on, like this. Okay. अब गेस करो, यहाँ पे देखो फर्स्ट बुक सेल में हमारी सारी कंप्यूटर साइंस की बुक रखी है। सारी कंप्यूटर साइंस की बुक्स रखी हुई है इस शेल में। ठीक है, समझना इस पॉइंट को। यहाँ पे सारी हमारी मैथमेटिक्स की बुक रखी है, यहाँ पे सारी हमारी फिजिक्स की बुक रखी है, यहाँ पे सारी हमारी केमिस्ट्री की बुक रखी है, देन इंग्लिश। केमिस्ट्री है यहाँ पे, इंग्लिश। देखो, ये केस है हमारा ऑर्डर्ड का। ऑर्डर्ड मीन्स सब चीज ऑर्डर में है। अगर 100 बुक्स हैं तो 100 बुक्स वन बाय वन है। फर्स्ट कंप्यूटर साइंस है, देन मैथमेटिक्स है, देन फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री, देन इंग्लिश है। ऑर्डर है यहाँ। अगर हम एक और एग्जांपल लें, 100 बुक्स है हमारी, 100 बुक्स, एक बुक शेल्फ है हमारे पास, एक बुक शेल्फ है हमारे पास, पर कोई ऑर्डर नहीं है उसका। क्या मतलब है उसको? सेम चीज मैं कॉपी कर रहा हूं यहां से। देख- देखो,
यहाँ पे कुछ बुक्स जो है वो कंप्यूटर साइंस की पढ़ी हुई हैं, कुछ बुक्स जो है वो सपोज दैट हिंदी की पढ़ी हुई हैं, कुछ बुक्स यहाँ पे सपोज दैट फिजिक्स की पढ़ी हुई हैं, कुछ बुक्स यहाँ पे केमिस्ट्री की पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ बुक्स हमारी फिजिक्स की भी पढ़ी हैं, कुछ बुक्स हमारी केमिस्ट्री की भी पढ़ी हैं, ओके, कुछ बुक्स हमारी हिंदी की भी पढ़ी हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डरिंग हो रही थी हमें। ऑर्डरिंग का मतलब क्या था कि वन आफ्टर अनदर चल रहा था, बट यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं है। बुक्स हैं सारी, बुक्स हैं सारी, मतलब इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, बट कोई भी ऑर्डर नहीं है यहाँ। तो ये हमारी सेट की स्टोरी। सेट क्या करता है भाई, एलिमेंट्स को तो स्टोर कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है एलिमेंट्स को स्टोर करने, बट कहां पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है ये तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट कमिंग इन सीक्वेंस डेटा टाइप, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का मीन एलिमेंट्स हमारे हैं, लेकिन कहां पे कौन सा एलिमेंट है नहीं पता। दैट इज, so in other words, if I can take one more example, purse, purse, ladies purse. Okay, let's take example of ladies purse. Some funny example I am taking so that you will get more clarity what is the meaning of ordered and what is the meaning of unordered. देखो ladies purse, so suppose that in ladies purse only one chain is there. If only one chain is there, then everything, whatever things is there in the purse, that will be stored. Okay, and whatever items are there, that items are stored randomly in that one chain, in that one chain. अब एक पर्स है जिसमें सपोज दैट फाइव चेन्स, तो क्या तुम ऑर्डर कर सकते हो दैट इन फर्स्ट चेन हम मोबाइल रखेंगे भाई, इन सेकेंड चेन हम क्या रखेंगे, सपोज दैट मनी रखेंगे, थर्ड चेन सब कुछ अदर आइटम रखेंगे। अब बताओ इसमें ऑर्डर वाला कौन सा है, फाइव चेन्स वाला ऑर्डर वाला है या वन चेन वाला ऑर्डर वाला है, क्योंकि आइटम सारा पर्स के अंदर ही है, लेकिन वे अलग है दोनों, स्टोरिंग का वे अलग है। तो कौन सा यहाँ पे ऑर्डर्ड वाला है, कौन सा यहाँ पे अनऑर्डर्ड वाला है। बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, तो रियल टाइम एग्जांपल देख, पांच चेन्स वाला जो है ये हमारा ऑर्डर्ड कलेक्शन है। क्यों, क्योंकि भाई हर चीज का हमने हमने दिया हुआ है कि भाई इस चेन में हम ये चीज रखेंगे, इस चेन में हम ये चीज रखेंगे, हमने दिया हुआ है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक ही चेन है, उसके अंदर हमने सब भर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सेट का एग्जांपल होता है। तो ये डिफरेंस होता है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में। अनऑर्डर्ड में कोई भी हर चीज रैंडमली रहती है, लेकिन हर चीज रैंडमली पड़ी रहती है उसमें। लेकिन अनऑर्डर्ड में, सॉरी ऑर्डर्ड में हमेशा एक रूल रहता है, वन आफ्टर अनदर टाइप ऑफ थिंग रहती है। तो सेट यहाँ पे इसलिए सीक्वेंस डेटा टाइप में नहीं आता है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है नेचर। अनऑर्डर्ड मींस वन आफ्टर अनदर स्टोरी नहीं रहे। आई विल शो यू विद लाइव एग्जांपल। सी, if you want to represent a set, use square brackets. Just write 10, 20.5, then true, then false. Some values I am taking. I will show you with example. See, and then I am taking 300. Let me print. Let me print set one type. क्या ये सेट टाइप है भी कि नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। देखो, सी, इट इज ऑफ सेट टाइप। नाउ अब अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि भाई एलिमेंट्स तो तुम्हारे सेट वन के अंदर है, जो भी एलिमेंट्स तुमने लिए हैं ये सारे एलिमेंट्स तुम्हारे सेट वन के अंदर है, ये तो श्योर है, लेकिन कहां पे कौन है ये नहीं पता है। अब देखो मैं इसको रन करूंगा, मे बी ये एलिमेंट जो है ये पहले आ जाए, मे बी ये एलिमेंट जो है ये पहले आ जाए, क्योंकि ऑर्डर नहीं है यहाँ, इंडेक्सिंग है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब तुम लोग बताओ क्या कोई डिफरेंस आ रहा है हमारे आउटपुट और इनपुट में। देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, इस वजह से सारे एलिमेंट्स रेंडमली पड़े हुए हैं, कोई भी एलिमेंट कभी भी आ जाए। इज इट और नॉट, टेल मी। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनऑर्डर, दैट इज द मीनिंग ऑफ अनऑर्डर्ड। और डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, अगर हमने 300, 300 लिखा है, देखो डुप्लीकेट्स हैं यहाँ पे, तो हमारे डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा सेट। देखो, ऑटोमेटिकली हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो गई है सब। सो दैट इज योर सेट डेटा। So what is the story? Collection of dissimilar elements. देख लो यहाँ पे dissimilar elements का storage. Then unordered in nature. Unordered means कोई order नहीं है, कोई भी element कहीं भी जा सकता, randomly है, सारे elements randomly पड़े हुए, ठीक है, set के अंदर। Represented by curly braces. You will see curly braces I have used.
Okay, then mutable in nature, that I can show you. See, I want to add any element in this. So for that, there is one function. Function is what? Function is some inbuilt code. This is some inbuilt code which is there. And add means I want to add element in this. So I am adding something like 250. अब ये कहाँ 250 ऐड होगा? कोई बता सकता है कहाँ पे ये 250 ऐड होगा? सोचो, कहाँ पे ये 250 ऐड होगा? कोई बता सकता है कि भाई मैं 250 ऐड करना चाह रहा हूँ इस सेट के अंदर, तो कहाँ पे ऐड होगा? क्या बता सकता है कोई? सही है, सुनो, दैट्स इट। गलत हो जाएगा, क्या ही होगा, गलती तो होगा। हम सर लोग नहीं लास्ट बता में। सकते, नहीं, नहीं बता सकते, नमान नहीं बता सकते। Why? Because it is unordered। कोई ऑर्डर नहीं है भाई, कोई ऑर्डर नहीं है, तो रेंडमली पड़ा हुआ है, वो कहीं भी आ सकता है। मे बी आखिरी में आ जाए, मे बी सबसे पहले आ जाए, ये भी हो सकता है। भाई कोई बैग है, उसके अंदर तुमने रेंडमली चीजें डाल दी है, तो जब उसमें निकालना चालू करोगे या उसमें कुछ डालोगे तो वो कहीं भी चला जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो पहली पोजीशन पे ही रहेगा या लास्ट पोजीशन पे रहेगा, ये तुम नहीं कह सकते, किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। सी हियर 250 कहाँ आ गया? बीच में। देखा? ये मतलब होता है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब है कि भाई कोई बैग है, और यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल, बैग ऑफ बॉल्स। सी, कोई बैग है, ये बैग है हमारा, इसके अंदर बॉल्स है। अब भाई कोई भी बॉल निकल आएगी ना, क्योंकि सारी बॉल रैंडमली पड़ी हुई है। अगर हम इसमें कोई ब्लॉक्स बना देते हैं 3, उससे हम बॉल निकालते तो भाई वो अलग केस बन। यहाँ पे हमारी सारी बॉल रैंडमली पड़े हुए हैं, हम कोई भी बॉल निकालेंगे वो कोई भी निकल सकती है। चाहे तुमने आखिरी में जो ऐड की हो वो निकल आए, या फिर जो पहले ऐड की हो वो निकल आए, कुछ भी ऐड हो सकता है, कुछ भी निकल सकता है। So that is the meaning of unordered। तभी यहाँ पे देखो 250 हमारा कहाँ पे ऐड हुआ है? यहाँ पे ऐड हुआ है। अब देखो यहाँ पे सेम कोड अगर हम कहीं और रन कर रहे हैं, लेट मी शो यू। देखो, मे बी इन सेकेंड केस कहीं और भी ऐड हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसी पोजीशन पे, क्योंकि अनऑर्डर्ड मींस कहीं पे भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग सेट्स आर अनऑर्डर्ड इन नेचर। है उस सेट के अंदर, बट कहाँ पे है तुम नहीं बता सकते। यहाँ पे भी मिड मिड पे ऐड हो जाए, कोई और कंपाइलर यूज करे, मे बी समवेयर एल्स ऐड हो जाए, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज ऐड होगी, क्योंकि एलिमेंट्स हैं लेकिन सब अनऑर्डर्ड, कहीं भी पड़े हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे पड़े हुए हैं ये तुम नहीं कह सकते। अभी कोई पूछे कि भाई ये 20.5 कहाँ पे है, नहीं बता सकते, क्योंकि इंडेक्सिंग है ही नहीं यहाँ पे। तो इंडेक्सिंग नहीं है तो कहीं पे भी ये चीज, एलिमेंट्स है, ये सेट है, इसके अंदर पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं कोई नहीं जानता। ओके, दैट इज। सो ये हमारा सेट डेटा। नाउ 2 to 3 minutes are there, whatever questions and doubts are there, please let me. Any type of question, any type of doubt you guys want to ask, you can ask. हाँ, सर अगर इसमें इंडेक्सिंग नहीं है तो किसी भी एलिमेंट को अगर चेंज करना हो तो वो कैसे होगा? चेंज हम लोग एलिमेंट वाइज करते हैं। जैसे वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, इंडेक्स के बेसिस पे करते हैं, पोजीशन के बेसिस पे करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, अगर तुमको चेंज भी करना है तो हम ये 300 को कर सकते हैं। हम वैल्यू के बेसिस पे चेंज करेंगे, ना कि पोजीशन के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे पोजीशन के बेसिस पे नहीं चेंज कर सकते। अगर तुमको कुछ करना भी है तो हम क्या करोगे, वैल्यू के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल दिस 20.5 को तुमको हटाना है, तो तुम ये 20.5 हटाओगे वैल्यू। ठीक है, तुम पोजीशन वाइज कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अनऑर्डर्ड है, पोजीशन आई नहीं। समझ गए? लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग में क्या हो रहा था कि भाई पोजीशन थी हमारी, इंडेक्स मींस पोजीशन, 0 1 2 3 पोजीशन थी। यहाँ पे कोई पोजीशन कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे वैल्यू के बेसिस पे चीजें होंगी। जो भी चीज करोगे वो वैल्यू के बेसिस पे। अब यहाँ पे अगर बैक का एग्जांपल दोगे, भाई किसी ने कह दिया मेरे को ऑरेंज कलर की बॉल चाहिए, तो तुम्हारे पास पोजीशन नहीं है यहाँ पे ऑरेंज कलर की जहां बॉल मिलेगी तुम वहां से उठा लो। ठीक है, अगर तुमने कहा होता भाई मेरे को थर्ड बॉल चाहिए, तो भाई अगर ब्लॉक होते 3 तो तुम थर्ड ब्लॉक में जाते हो, वहां से बॉल को। तो यहाँ पे पोजीशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे वैल्यू के बेसिस पे हम चेंजेस कर। फॉर एग्जाम्पल आपको 20.5 डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को हमको चेंज करना, 10 को हमको हटाना है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ऐड करना है कुछ, कर दो। एटलीस्ट कहाँ पे ऐड होगा नहीं पता। अगर कुछ डिलीट भी तुम करोगे ना, तो वो डिलीट वैल्यू के बेसिस पे हो, ना कि पोजीशन के बेसिस। ये नहीं कह सकते हम कि भाई मेरे को मिड एलिमेंट डिलीट करना, नहीं कर सकते हम ये चीज। ओके, लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है, नहीं कर सकते हम ये चीज। ठीक है, दैट इज द थिंग। पोजीशन के बेसिस पे यहाँ कोई चीज नहीं हुई है, यहाँ हर चीज वैल्यू के बेसिस पे होती है सेट। ठीक है, इसका क्लियर लाइक इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं सेट के अंदर। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग यूज करेंगे। ये तो जस्ट आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, जस्ट फॉर आइडिया पर्पस आई एम टेलिंग।
ओके, बहुत सारी चीजें इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। या सर क्लियर हुआ कि वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे करेंगे, पोजीशन और इंडेक्स के बेसिस पे कुछ नहीं करेंगे। यस सर, क्लियर सर। ये कोलैब का लिंक है, एवरीबॉडी दोज हु वांट टू डू प्रैक्टिस दे कैन रेफर दिस कोलैब। ओके, यहाँ पे सारे जो भी चीज मैंने की हुई है सब। नाउ इफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ डाउट यू गाइस वांट टू आस्क, प्लीज लेट मी नो। या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट किसी को? ओके